My name is Asad Raza. I'm a financial educator, trainer, and tax expert. Good evening, Assalamu alaikum, Ji Ayanu. I'm your host Asad Raza, back again with another informative episode of Money Matters. And guess what? This is our 20th episode, live and exclusive on Voice of Toronto TV. This is your platform, and we're bringing it live and exclusive on this weekend night so that you can learn, enjoy, and plan your financial future of your family with your family on your dining table. So, one more time, I welcome you, being your host Asad Raza, in this episode number 20 of Money Matters. And today we promise you we're going to continue from where we left last time around, because हम डिस्कस कर रहे थे कनाडा में टैक्सेशन को. एंड मैंने आपके लिए 3 प्रोग्राम्स पे मबनी एक सीरीज बनाई है, जिसका एपिसोड नंबर 1 जो हमने लास्ट टाइम किया था, यू कैन ऑलवेज गो एंड गेट बैक इनटू दैट. हमने अपने साथ इनवाइट किया था और सीपीए, our tax experts, somebody was working for PwC as an auditor, और हमने उनसे कुछ ख्यालात का इजहार किया था और उनसे कुछ टैक्सेशन, कैनेडियन टैक्सेशन से रेलेवेंट कुछ मिथ्स भी डिस्कस किए थे लास्ट प्रोग्राम में. We all had a lot of requests from your side, a lot of comments from your side. You guys loved that last episode, and hopefully the closing third series of taxation, we're going to bring her back on, and we'll have a powerful conclusion to help you prepare for your taxation, which is the first big thing in any new calendar year, isn't it, guys? We're going to prepare you. We got your back at live and exclusive on Voice of Toronto TV. Today we're going to discuss few important things again, and out of that I'm going to touch base why it is really important to file your taxes as international students in Canada, because a lot of the time I see these guys are not filing it. Second, we're going to talk about Canadian income tax brackets, federal brackets and provincial brackets. We're going to talk about tax credits, how tax credits are different than tax refunds. इसकी बारे में बात करेंगे. And lastly, I'm going to talk about why, when there's a lot of platform like TurboTax and some other nitty-gritty tools are available for you, NetFile, that where you can file your taxes for free by yourself, why it is still a recommendation. Why would I still recommend to file your taxes with an expert and not by yourself using those tools? We're going to touch base on that as well. I'm going to give you why I feel so that this has to be filed with professionals. But one more time before I go forward, let's give it up for Anjum Malik for putting up this show and bringing me in front of you. I know how busy he is. I know he knows how busy I am. But to take this time out to be with you is to provide you all the value. हम चाहते हैं कि आप सीखें, इस country में community को lift करें. But the purpose itself is killed अगर आप इसको share नहीं करते हैं इस episode को, if you don't like this episode. And that is what we talk about. So, but we'll talk about that later on. But at this moment I'm going to tell you that if you're a small business owners, if you have something of your own जिसमें आप चाहते हैं कि your things are being taken out to the community, हम लोगों तक आपकी आवाज को पहुंचाएं, आपके काम को पहुंचाएं, आपकी प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं, तो आपके सामने चैनल नंबर्स मौजूद हैं. You can pick up the phone call, you can ask our marketing team to help you, assist you, give you a marketing strategy, and will become your voice to help your business grow, right? It's very easy. You can pick up the phone call, you can dial the number. As far as our social media handles are concerned, so you can watch us, our work at Voice of Toronto TV. We are available on Facebook, we're on YouTube as well. You can go into votmedia.ca to find our website and see all the great things happening. At the same time, if you want to know what I am doing for the community and what my work is, and if you want to get some benefit out of it, you can always search me. My Instagram page is Change Lives with Asad, and you can always go and find the work what I'm putting over there every day basis. My team is working hard to make it easier and simpler for you. Also, we have a website exclusive, which is also RDA, R as in Romeo, D as in Doctor, A as in Apple, RDA Square, SQUAREINC.ca. And this is the most comprehensive financial website in Ontario, I would say in GTA, and you can go and you can type your need and you can find out whatever you're looking for. It's very handy to use. You can make an appointment with our team and our team can reach out to you and can help you. Or elsewise, you all have my number on the screen, 905-514-3451. You can pick up the phone call, you can participate live in our show and through your calls, or you can text message us
after that as well. Plus, if you want to make your appointment, do drop your messages and your comments on this number, and I'll definitely add your advice on top of that as well. So one more time, this is why Money Matters comes live to you every Friday, so we can become part of your finances. We can teach you a little bit something that you're missing out, and we can find out exactly what is missing in your financial planning. Today, as I said, is going to be text part 2, and we're going to discuss all the amazing things from this episode. So guys, let's dive down into this without wasting any more time. All right. So last time we understood some myths about taxation, how some people feel it should be filed. कुछ लोग कहते हैं इसको फाइल नहीं होना चाहिए. कुछ लोग जो हैं वो उनके ख्यालात ये हैं कि अगर हम टैक्स फाइल नहीं करेंगे तो मे बी वी आर एबल टू हाइड आवर इनकम और हम जो है उसके ऊपर कुछ बेनिफिट्स ले पाएंगे. कुछ लोग कैश पे काम करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इस कंट्री में टैक्स में कैसे पे करें, कोई रिपोर्टेड इनकम नहीं है. तो हमने कुछ मिथ्स को कवर किया था. आज मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, टैक्सेस में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि टैक्स रिटर्न जब फाइल किया जाता है, इट कुड पॉसिबली ब्रिंग टू रिजल्ट्स टू यू. दो चीजें हो सकती हैं जब आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, विथ एन अकाउंटेंट करते हैं या फिर आप किसी वेबसाइट की सपोर्ट लेके करते हैं जो कि अवेलेबल है. तो आपको दो चीजें हो सकती हैं व्हेन यू फाइल द रिटर्न. तो अगर तो आपका टैक्स ज्यादा कटा हुआ है पिछले साल में तो आपको रिफंड आ जाता है. ठीक है. अगर आपका टैक्स ज्यादा कटा हुआ है, आपकी टैक्स ओइंग कम थी लेकिन कट ज्यादा गया है बाई वीकली और मंथली पेचेक से, तो यू विल गेट टैक्स रिफंड. और अगर इसका ऑपोजिट हो गया, दैट मींस आपका टैक्स कटा कम है बट एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेशन के बाद बनता ज्यादा था कटवाना, तो आप पे करते हो. राइट दोनों चीजें हैं. तो ये अमूमन क्वेश्चन रहता है लोगों का कि जी टैक्स रिफंड आएगा कि नहीं आएगा. तो उसकी बड़ी सिंपल साइंस है, इफ यू हैव पेड मोर यू विल गेट refund. If you have paid less, you owe them and then you have to pay after filing your taxes. So ये तो हो गया जी टैक्स रिफंड. और टैक्स रिफंड किस चीज पे डिपेंड करता है? टैक्स रिफंड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो एलिमेंट है जो लोग समझते नहीं है, दैट इज नो कॉल्ड टैक्स क्रेडिट. टैक्स क्रेडिट का ह्यूज रोल है टैक्स रिफंड में, कि आपको रिफंड आएगा या नहीं आएगा. उसमें टैक्स क्रेडिट, अब टैक्स क्रेडिट क्या चीज है? अगर आज आप मेरे साथ सिर्फ ये टैक्स क्रेडिट ही समझ लेते हैं, आई विल टेल यू, यू विल बी एबल टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ दीज टैक्स क्रेडिट्स जो अमूमन लोग मिस कर देते हैं. सो टैक्स क्रेडिट की एक सिंपल एग्जांपल आपको देके बताता हूं. लेट्स से वी आर इन अ गेम वेयर एवरीबडी, जो भी गेम खेल रहा है पार्टिसिपेंट, उसको एक बैज कलेक्ट करना है. जिसके पास ज्यादा बैजेस होंगे वो विनर हो जाएगा. लेट्स सपोज कि ये गेम खेली जा रही है. सो टैक्स क्रेडिट की एग्जांपल बैजेस की जैसी है. इसी तरह मैं कहता हूं कि अगर आप ज्यादा टैक्स क्रेडिट के बैजेस इकट्ठे कर लेते हैं अपने पास, तो आपका टैक्स जो रिफंड है वो ज्यादा हो जाएगा, ओइंग आपकी कम हो जाएगी. क्योंकि टैक्स क्रेडिट वो बैजेस हैं कि जितने आपके पास ज्यादा होंगे, आपकी इनकम में से ये टैक्स क्रेडिट जो है ना माइनस होते रहते हैं. और माइनस होने की वजह से आपकी इनकम छोटी होती रहती है. जितनी इनकम छोटी हो जाती है उतनी टैक्स ब्रैकेट लो हो जाती है. और आपका अगर टैक्स ज्यादा कटा हुआ था हायर ब्रैकेट के मुताबिक पूरे साल में, यू गेट अ रिफंड बैक. तो समझ में आया आपको? टैक्स क्रेडिट्स और टैक्स रिफंड गो हैंड इन हैंड. नाउ if I tell you, there are so many things that can become part of tax credit, but that only happens if you file your taxes. जब आप टैक्स फाइल करते हैं, रिटर्न देते हैं, फाइल करते हैं, देन कुछ टैक्स क्रेडिट मिलते हैं, जैसे ट्रिलियम हेल्थ क्रेडिट्स. Right, you all receive some health credits, like some other credits that other international students and their spouses receive, some other Canadian tax credits that are part of us, like we mentioned Trillium hospital benefit, and we mentioned couple of other benefits where you can collect them, like medical expenses, like all those things. These are part of tax credit. देखिए टैक्स क्रेडिट आपको तभी मिलेंगे, ये नॉन कैश चीजें होती हैं जो आपकी इनकम को रिड्यूस करती हैं, बट यू आर ओनली एबल टू गेट टैक्स क्रेडिट अगर आप टैक्स फाइल करते हैं. अगर आपने टैक्स फाइल ही नहीं किया तो आपने उस साल कोई ना ट्रिलियम हेल्थ का बेनिफिट एक्यूमुलेट किया, ना आपने जीएसटी एचएसटी को एक्यूमुलेट, आपके पास टैक्स क्रेडिट जो है एक्यूमुलेट ही नहीं हुए, ना आपकी इनकम से वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं, एंड दैट इज व्हाई योर ओइंग, आपकी ओइंग ज्यादा बन जाती है. सो पहली चीज तो हमने अंडरस्टैंड करनी है टैक्स फाइल करने से पहले
कि आपको अपनी टैक्सेस बचाने कैसे हैं। बचाने का तरीका ये है कि इनकम को आपने लीगल वे में रिड्यूस कैसे करना है। तो लीगल वे में रिड्यूस करने के लिए एम्प्लॉइज के पास तो कुछ ज्यादा गुंजाइश रहती नहीं है। बीइंग एन एम्प्लॉय, अगर आपके पास ऑफिस घर से यूज कर रहे हो तो ऑफिस स्पेस क्लेम कर सकते हो बड़ी मैक्सिमम। उसके लिए भी एक फॉर्म होता है, आई थिंक T22 समथिंग करके, दैट योर एम्प्लॉयर हैज टू साइन। अगर वो साइन कर देते हैं तो आप उसका थोड़ा सा टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर लेते हैं। तो एम्प्लॉइज के पास कुछ बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं इनकम को डाउन करने की, तो उसमें टैक्स क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू ब्रिंग दैट इनकम डाउन। अगर आप मैरिड हैं तो भी टैक्स क्रेडिट आपको भी थोड़े से मिल जाते हैं। वो टैक्स क्रेडिट आपकी इनकम में से रिड्यूस करवाते हैं आपकी इनकम को। नाउ योर इनकम ब्रैकेट गोज डाउन एंड टेक्निकली आपको जो है एक रीफंड आ जाता है। कई लोगों का सवाल होता है कि अगर हमने टैक्स फाइल नहीं किया तो क्या टैक्स क्रेडिट हमें मिलेंगे? आंसर इज नो, टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेंगे। एक और सवाल लोगों का होता है कि अगर हमने टैक्स फाइल किया है और टैक्स क्रेडिट आ गए हैं तो क्या टैक्स क्रेडिट भी रिडीमेबल मनी है कि जो हमें पैसों की सूरत में वापस मिलेगा? आंसर इज नो, टैक्स क्रेडिट की मॉनेटरी वैल्यू कुछ नहीं है। आपको वो आपकी इनकम रिड्यूस करने में यूज होते हैं। अदरवाइज अगर इनकम रिड्यूस नहीं हो रही तो आप ऐसा नहीं कर सकते वो टैक्स क्रेडिट जो है वो आप रिसीव कर लें। तो टैक्स क्रेडिट्स की आप कैश वैल्यू कोई नहीं है, आप उसको कैश में या मॉनेटरी वैल्यू में रिसीव नहीं कर सकते। ऑल यू कैन डू, ये टैक्स क्रेडिट आपकी इनकम में से माइनस होकर आपकी इनकम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने टैक्स फाइल नहीं किया, आपके इस साल के टैक्स क्रेडिट लूज हो जाएंगे। यू कैन नॉट इवन कैरी फॉरवर्ड your tax credit. So this is about tax credits. Now find out, this is your job. Go on to the internet or talk to your accountant. If you do not have an accountant, you can contact us, and you can contact our team. We can help you, educate you more about what tax credits आपके पास available हैं for this year, and then you can use them to reduce your income. So this is our first thing that I wanted to teach all of you. Tax credits are important. Who gets tax credit? Only the people who file taxes. Now, this brings me to our second discussion topic that I mentioned today, that the importance of filing taxes for international students. Now, if you're international students watching this program right now, and around you people are telling you that it's okay not to file taxes because being a student you're not making a lot of income, or at this moment even if you don't file, nothing massive is going to happen. Even if you file, you won't get any refund, stuff like that. So listen to me, all you international students. It is really, really important for your PR, work permits, and all those things that you file taxes in this country, right? This country is going to issue you all the important documents that you need for your permanent residency and, of course, for your work permits. So if you don't file taxes, that will go, first of all, against you. Second thing, even if somebody is telling you that you are not going to get any tax refund, so what? You will still be able to accumulate some tax credits. And for international students, some of the tax credits are really, really important. Number one, for example, if you're a married international student here and your spouse is also here, and if you do not file your taxes, perhaps you do not get any tax credit towards your spouses, which could be really good. You can receive childcare benefit if you have a family, if you have child here, and that's say you're just a student, still you're eligible to receive some tax credits for childcare benefits, right? This is really, really important. But if you don't file tax, you cannot receive. It's likewise, you might need some of the tax credits that can help you with your higher education. Let's say after this diploma, you want to go do some other degree, you can use some of those tax credits towards that as well. So even if your income is zero, even if you haven't making any income, report a zero income, but do file your taxes, because taxes will accumulate you tax credits. Those tax credits are really helpful for you for next education programs, or if you have spouses, that can really become big help for you. You can receive some money, extra money, that you can use towards your expenses. So make sure, being an international student, you do file taxes. On top of that, filing taxes means most of the time you do receive certain Canadian incentives. For example, workers benefit. So government of Canada last year introduced this tax credit, where if you have worked full time in country Canada, you are receiving first time a full workers benefit. So अगर आप पहले साल आपने work किया है Canada में and you've completed work for most of the year, you might be eligible for that. Let's say if you have worked only for a few months, what you can do, आप इस साल उसको claim मत करो उस benefit को. Next year when you are going to work full 12 months,
आप अगले साल अपना वर्कर्स फर्स्ट टाइम जो वर्कर्स बेनिफिट उसको क्लेम कर सकते हो. And that way, being an international student, I have seen last time in our company when international students filed taxes with us for the very first time. Let me tell you, if you're international students watching this, some of them got 3,000, 2,500 worth of refunds. So this is very possible when we include your first full year of employment in this country. So if you are yet to consider that, make sure you call and you find out the right thing in that as well. So this is why it is really important for international students to file your taxes, right? So now let's talk about something very important with relevance to taxation that I feel a lot of the time people do not know how tax is calculated, right? How tax is calculated. So I tell you, income tax in country like Canada is always calculated based on the income brackets. All right, so there are federal income brackets, and in federal income brackets अगर आप देखें वो change नहीं होती हैं, वो federally announced हैं. And I will just give you some federal income tax bracket. If you're making notes, if you have a copy and pen with you, you can write down or you can find out at your own as well. I'm going to give you federal tax brackets, वो change नहीं होती हैं. And on top of that, I'm going to show you some provincial tax brackets. अलबत्ता provincial tax bracket change होती है province to province. होता क्या है, फेडरल टैक्स ब्रैकेट प्लस प्रोविंशियल टैक्स ब्रैकेट is your total tax, right? So this is how you calculate. And one more thing, so let's say when income bracket change, tax bracket change. जब आप इनकम ज्यादा कमाते हो तो आप टैक्स ज्यादा देते हो. तो थोड़ा सा बात करते हैं टैक्स ब्रैकेट्स की, और मैं आपको टैक्स ब्रैकेट्स बताता हूं. फेडरली 2024 में इनकम टैक्स ब्रैकेट अगर हम फेडरल बात करें, so it is 15% taxes up to $55,867 of income. तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम इस साल 55,867 $55,867 है या इससे कम है, your federal tax bracket is going to be 15%. 15% आपको ये फेडरल टैक्स ब्रैकेट यहाँ लगेगी. फेडरल टैक्स ब्रैकेट जनाब अली 20.5% हो जाती है जब आपकी इनकम सालाना जो है वो 55,000 से क्रॉस करती है. सो इफ योर इनकम गोज ओवर 55,867 and it is less than 111,000, between 55 and 111 फेडरल टैक्स ब्रैकेट 20.5% हो जाती है. ओवर 111,000 till 173,000 फेडरल टैक्स ब्रैकेट 26% हो जाती है. Over 173,000 until 246,000 federal tax bracket 29% हो जाती है. And if somebody is making over $246,000 in Canada a year as an employee, their tax bracket, federal tax bracket is 33%. ये सिर्फ फेडरल टैक्स ब्रैकेट्स है. फिर सवाल उठता है कि आप रहते किस प्रोविंस में है, उसकी अगर वो प्रोविंस का कोई टैक्स है वो इसके अंदर प्लस होगा. तो लेट्स टॉक अबाउट लार्जेस्ट प्रोविंस, सम ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस. ओंटारियो की बात करते हैं. ओंटारियो में प्रोग्राम देखा जा रहा है. वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी ओंटारियो का जीटीए का मेजर चैनल है. सो लेट्स टॉक अबाउट ओंटारियो. ओंटारियो में अगर आपकी इनकम 51,000 या उससे कम थी तो ओंटारियो की टैक्स ब्रैकेट आपको लगेगी 5.05%. अभी मैंने आपको बताया कि फेडरल टैक्स ब्रैकेट अगर 55,000 से कम इनकम है तो फेडरल टैक्स ब्रैकेट है 15 प्लस ओंटारियो की टैक्स ब्रैकेट अप्लाई हो जाएगी 5. टोटल टैक्स कितना कटेगा आपका 51,000 इनकम के ऊपर 20%. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर टोटल टैक्सेस. इसी तरह लेट्स से हम एक फिगर पकड़ लेते हैं. इफ यू लुक इनटू, इफ यू टाइप ऑन गूगल, आस्क मिस्टर गूगल हाउ मेनी परसेंट ऑफ कैनेडियंस आर मेकिंग $100,000, probably the answer would be 17 to 18% of Canadians are making $100,000. Everybody else is making under $100,000. अगर आप देखते हैं कितने परसेंट कैनेडियंस 1 लाख या 2 लाख डॉलर तक कमाते हैं, आंसर वुड बी 3%. 3% Canadians earn $200,000. Only 1% Canadian earns $250,000, that is $250,000. So highest tax bracket 250,000 से start हो जाती है, and at that point in time 33% फेडरल टैक्स होगा. और अगर आप ओंटारियो में $2,20,000 से ज्यादा की जॉब कर रहे हैं, प्रॉब्ली अगर आप डॉक्टर हैं या हाई लेवल पे आप किसी कंपनी में हेड हैं, एंड योर इनकम इज ओवर $200,000, then
13.616%. That means 13% प्रोविंशियल टैक्स होगा, 33% फेडरल टैक्स होगा, टोटल आपका टैक्स लगेगा 46%। दैट मीन्स अगर आपकी $2.5 लाख की सैलरी है तो उसमें से 1,25,000 तो ऑलमोस्ट टैक्स में निकल जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद $125,000। सो this is the point where all the people who are making a lot of money, they get discouraged in this country when they feel like, oh, nothing is moving, we're working really hard, and we're making $250,000, we're part of the 1% Canadian, but at the same time we're taxed at 46%, including provincial and federal. Well, that's how it is, because Canada is a welfare based country. They are not supporting, they're not promoting any bagging in this country. So what happens, how it happens, people who are making higher income pay more in taxes, so that people are making less income are compensated with some value added welfare benefits. This is how the country system tries to reduce or not to promote the begging in this country. Whereas if we have come from some different countries, like when I came from the country I came from, I see on every single light stop, intersection, I see a lot of beggars, because they don't, it's not a welfare state. But Canada is a welfare state. So yes, if you, but you're hardened on the other side. I understand your frustration as well. If you're making a lot of money and you're paying a lot of taxes, honestly, trust me, I can understand what are you going through. But there are ways and means legally that government has provided you to put your money in and to learn, and that is where I have expertise. I am not going to talk about this right now in this particular episode. Maybe we'll touch base some other day on that. But if you're really interested, you're making a lot of money and you're paying a lot in taxes and you're losing the retaining power, you need to talk to me. I will show you some tools and strategies that will help you save taxes legally. That is not just deferring, but there are some really tax advantageous strategies as well that I and my team can show you. So this is a little bit about tax bracket. You all need to have a little bit idea about tax bracket, how it works, and federal plus provincial combines make your real tax, and this is what you guys pay on your annual salary, right? So we have touched base what is tax refund. We've touched base a little bit what is tax credit. We've touched base why it is really important for international students to pay taxes. हमने फिर touch base किया इनकम को, हमने टैक्स इनकम ब्रैकेट्स को देखा, फेडरल इनकम ब्रैकेट्स हमने देखी, फिर हमने ऑन्टेरियो को एज एन एग्जांपल लिया, और हमने देखा कि अगर कोई 2 लाख से ज्यादा जॉब पे अर्न कर रहा है, probably they're paying 40 to 45% in taxes, and that's why we're not able to create any wealth in this country. हमने थोड़ा सा सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, इनके प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम को. Now the last thing before I close today's program, and we're gonna do the last episode, which is more like conclusion episode, and we'll invite the CPA Kiran Siddiqui back again with us. She was with us last time around, and we will have some more questions on this conclusive third episode of tech series at Voice of Toronto TV at Money Matters. We'll bring her back again next week. But before I go on to that part, I'm gonna close this week by talking to you about the importance of filing your taxes with a professional. देखिए, ऐसी बात नहीं है कि आप सोच रहे हैं वहां बैठ के कि मैं कोई अपनी दुकान चमकाने की कोशिश कर रहा हूं. नो, ऐसा नहीं है. What I am and this channel is trying to achieve is not to fill our own pockets, but this channel and we are trying to achieve to spread out the right information. I'm for emphasizing on right information, क्योंकि हम हर रोज बहुत लोगों से मिलते हैं, और जितने लोगों से मिलते हैं उतनी बातें भी सुनते हैं. We do come across some professionals, we do some come across some unprofessional people at the same time as well. But लोगों ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुन रखा होता है, तो जब हम लोगों से मिलते हैं तो we receive a lot of information. I call that not all factual information, but I would definitely call that more opinions what people carry with them. Some of them are myths, some of them are really factual, some of them are just half there. So I would always recommend, when we're living in a sort of age and world where we have a lot of information and a lot of word of mouth coming from every side, and then AI provides us with a lot of information too, it also becomes confusing. See, there's a book written, and the name of the book is, I have read that book. I want you to read that book as well if you really want to understand what I'm trying to make a point right now. My point is that there's a book called Business of 21st Century, Business of 21st Century by Babylon. Read this book, and in this book, this books talk about that in 21st century, artificial intelligence or information will become so common that everybody
Doesn't really matter they're educated or they're uneducated, they're gonna get access to and get hold of a lot of information with the help of AI. And we all see what Chat GPT is doing and all those forums coming over doing and providing us. So that books talk about the information will become so overload and so easily and readily accessible that people are not going to make any decisions. They're going to get more confused. So this is my point. When you are filing your taxes with the some of those softwares like TurboTax, NetFile, yes, you are provided with step-by-step guidance. Yes, you can file your taxes, but hold on for a second. For a moment or so, ask yourself, are you an expert of taxation? Second, if they have devised that system, okay, is that system making you a recommendation? Probably they are not designed to make you recommendation. They are able to help you file your taxes, those softwares, but more importantly, some of the tax credits that I spoke about, some of the those tax credit, the terminologies were not, as a common person, we're not aware of those things. So when those software ask you those questions, sometimes we skip some of those things, and that has an effect and impact on our tax refund. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने तौर पे फाइल किया है जस्ट टू सेव 40-50 डॉलर्स ऑफ मनी दैट दे हैव टू पे टू दैट अकाउंटेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे उनके रिफंड्स जो हैं वो किसी दूसरे पर्सन के रिफंड से कभी कभी 500-700-800 डॉलर्स तक कम होते हैं. सो यू नो सेविंग $40 does it make sense to leave a tax credit or a tax benefit which is giving you maybe $500 in refund? This is where I feel sometimes when we are not a professional, doesn't really matter if an online free of cost tool is available. All what they are trying to give you a free $40 to make you a customer and a client on that form, but eventually you lose a lot of money from your pocket, because every time they want to give you a secret advice or a specific advice, they will ask you at these websites to hire their professional, and then they'll charge you money. So this is all drive to, this is all made to help people to drive people to go more independent. But when you go more independent about a thing where you don't have a lot of knowledge, you end up losing value. And that is what I see. लोगों के टैक्स गलत फाइल हो जाते हैं, लोगों को समझ ही नहीं आती है, उनके जो है क्रेडिट सही नहीं उनके काउंट हुए होते हैं. जब हमारे पास कोई टैक्स फाइल ऐसी आती है जो हम देखते हैं कि लास्ट ईयर का टैक्स खुद फाइल किया हुआ है, देन वी हैव टू एजुकेट दैट क्लाइंट कि भाई आपने ये चीजें मिस कर दी हैं. सो मेनी थिंग्स. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई ऑलवेज फाइल इज विद अ प्रोफेशनल. क्योंकि देखें, सॉफ्टवेयर आपको टैक्स फाइल तो शायद करवा दे जैसे तैसे करके, आप भर दोगे, रिफंड आ जाएगा, मगर वो सॉफ्टवेयर बातें नहीं करता. क्या वो सॉफ्टवेयर आपको ये बताएगा कि 2025 में आपने अपनी टैक्स स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, क्या चीजों पे फोकस करना है? अगर आप स्मॉल बिजनेस हो, कहाँ से आप चीजों को अगले साल आपने पूरा चलाना है ना, तो उसकी प्रेपरेशन कौन बताएगा? वो सॉफ्टवेयर ये नहीं बताएगा आपको. This is more important. While you're walking through the year, you should know what are the type of bills you need to save, what are the type of bills you need to discard, क्या चीज आप क्रेडिट एक्सपेंस में दिखा सकते हो स्मॉल बिजनेस, क्या चीज आप एज एन एम्प्लॉय कटवा सकते हो. तो वो जो प्रेपरेशन है और वो जो चीजें, how वो सॉफ्टवेयर कैसे आपको बताएगा? For that, it's not designed for that way. So to find the most value, don't try to save your 40, 50, $100. Always once in a year आपको ये सर्विस करनी होती है. Always go take and help of an accountant and then file your taxes. I'm sure, I'm really hopeful that you are enjoying this session. You're going to share this session. और पिछला भी जो एपिसोड हमने किया टैक्सेस के ऊपर, और आज जो हमने सेकंड एपिसोड किया है, this is really powerful. This is all what you need to learn in this country in terms of taxation. I can promise you, go back again to that episode, listen to this episode one more, send it to your loved ones, send us your love back in terms of your messages, your emails. हमें बताएं आप कैसा पसंद कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, क्या इसमें आप चेंजेस चाहते हो, कैसे आप समझ रहे हो, whether I can change something for you, आपके लिए और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, क्या आप इसको शेयर कर रहे हैं? बताएं, अपने ख्यालात का इजहार करें, और खुश रहें, सलामत रहें, हंसते रहें. And I'll be back again in the next Wednesday, next Friday with you 8:30, and we're gonna have our CPA accountant back with us, and we're going to give you some final verdict and conclusion and prepare you for the next year taxation with some really nice tips. Right, so stay tuned. Keep watching Money Matters. We're gonna be live back again next Friday 8:30, live and exclusive, Voice of Toronto TV. And just I'm good giving you a goodbye right now. I'm your host Asad Raza. Be all blessed. See you back again. My name is
is Asad Raza. I'm a financial educator, trainer, and tax expert.